Hello, can we start, guys? Please respond first. Yes, ma'am. Okay, try to solve these first questions. Okay, first let's recap. So, what is difference between neontology and paleontology? Guys, difference between neontology and paleontology? Anyone? Basically, paleonto means, as we already know, paleo means past, okay? Past or ancient. So basically, in paleontology, we are going to study the past life. जो past history में prehistoric में जितने भी life forms हमें मिले थे, हम उसकी study करते हैं. और which is come under the paleontology. Okay, basically past life. But here in neontology, basically neontology means newer. Okay, newer. तो जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं टिल नाउ, अभी के डेट में जो भी प्रेजेंट है, बेसिकली लिविंग थिंग्स. ओके, डील्स विथ लिविंग और एग्जिस्टिंग, सॉरी, जो अभी प्रेजेंट है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं नियंटोलॉजी. ओके, एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म. So this is the basically difference between neontology and paleontology. And there is one more terminology which is palynology. Okay, guys, इसका आंसर Like palynology. We are, study of yes, yes, pores or pollens. Fossil of pollen and spores. yes, yes, yes. The study of fossil of pores and pollen. Okay, so पेलिनोलॉजी में हम बेसिकली जो जो हमें फॉसिल्स मिले हैं पोर और पोलेंस ग्रेन्स, बेसिकली जो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग स्टेज तक पहुंचते हैं, उनको हम उनकी स्टडी को बोलते हैं पेलिनोलॉजी. ओके, सो दिस इज ऑल रिकैप एंड नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज द करेक्ट order of marine benthic. Okay, benthic basically come from the bottom. before benthic and before bottom, you can correlate by this. So bottom में जितने भी increasing depth, water depth. Okay, suppose this is the top and this is the depth at deeper ocean. Okay, suppose this is the ocean and this is the land part. Okay, so basically the question is asking about the zone, like sequence of the water depth. Okay, water से suppose this is going down ना, इधर depth क्या हो रहा है, depth is increasing higher and here depth is low, very low, क्योंकि ये अभी surface पे है. this is land area. okay, so ऐसे sequence को हम कैसे water depth के sequence को कैसे classify करेंगे, you have to answer. okay, here depth is very less, here depth is very higher. Option C, ma'am. uh, yes, you are right. Okay, this is narratic, then bathyal, and then abyssal. And one mode which is very depth is Hadal. Okay, if there is option is Hadal, but यहाँ कहीं Hadal option है नहीं. Hadal is the सबसे deeper one है. Okay, जो हम marine trench वगैरह देखते हैं, marine trenches which is found very depth, 1,000 kilometers. Okay, 11,000 kilometers depth below the oceans. That zone is known as Hadal zone. Okay, so you can see in this image, this is the
Sublittoral, this one is the littoral basically, which is found at the slope. Okay, you can say the continental slopey area जो है उसे हम बोलेंगे littoral. उसके just down below it we found it sublittoral. Littoral then sublittoral. Then this is going down more further down. This is known as Bethel zone, and then abyssal, and then Heddle. Heddle is last one. Okay, so you should remember the sequence: littoral, sublittoral, okay, then Bethel, abyssal, and then Heddle. Okay, Heddle is the last one. Okay, this is the more deeper. इससे जो भी डेप्थ की स्टडी है वो हम टिल नाउ हम वहां तक नहीं कर सके, सिर्फ हम हेडल जोन तक ही स्टडी कर पाए. ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दी वाटर डेप्थ, दी सीक्वेंस. ओके, बेसिकली this is the deepest and this is the lower deeper. Okay, you should remember the sequence, maybe it's asked in exam. Okay, so you can see in this image, this is the neritic and pelagic and oceanic, epipelagic, mesopelagic. This one is also asked in exam, so you should note down also pelagic, then it's epipelagic, and now meso. Bathypelagic, and now abyssal pelagic. Okay, pelagic term is basically come from the open ocean. Okay, which is not surrounded by any kind of landform. ये काफी बीच में सेंटर में, suppose this is here a kind of basin and another basin, और बीच वाला जो एरिया है which is not surrounded, ये वाटर है जो ओपन ओशन, ये इस जोन को हम इपीपेलाजिक, मेसोपेलाजिक, बैथीपेलाजिक के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है. ओके, एंड दिस इज लैंड एरिया बेसिकली. बैथल जोन, एबाइसल जोन, हेडल जोन, दिस इज अटैच्ड टू द you can say land. So these are, you can say, one more terminology, this is photic zone. Basically it's 200. Okay, 200, less than 200, where the you can get sunlight, जहां तक सनलाइट का इफेक्ट पड़े, बिकॉज दिस इज वेरी एट द लो लेवल डेप्थ. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सन का है, सनलाइट, दे कैन इम्पैक्ट. ओके, तो ऐसे लाइफ फॉर्म जो बेसिकली जिनको सनलाइट की बहुत ज्यादा नीड है, दे मे फाउंड एट द डेप्थ ऑफ द 200. ओके, इससे नीचे जितने भी हमें लाइफ फॉर्म मिलेंगे, दे आर नो नीड ऑफ द सनलाइट. बेसिकली जितने भी सनलाइट नीडेड प्लांट्स हैं, जिनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्टिविटी लाइक में इन्वॉल्व है, दे आर गोइंग टू बी फाउंड एट द फोटिक जोन. ओके, सो दिस इज एट द लेस देन 200 meters. Okay, so this is found at the sunlight zone. So this is known as the photic zone. Aphotic basically more than, sorry, this is less than, more than 200 meters. Okay, guys, done? मैम Yes, ma'am. Yes, yes. मैम जो नेरेटिक जोन कौन से बेसिस में डिवाइड किया गया है? ओके, जो नेरेटिक है हमारा, बेसिकली ये हाई टाइड और लो टाइड का एक जोन होता है. यू कैन सी दिस इज हियर नेरेटिक. नेरेटिक, सपोज दिस इज द लैंड फॉर्म और ये जो ओशन है. ओके, हाई टाइड, लो टाइड क्या होता है गाइस, यू नो, दिस इज बेसिकली द पीरियोडिकल हायर और लोअर ऑफ द सी लेवल. ओके, राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल. जब सन का और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और मून जब सारे कॉन्ट्रैक्ट करते, दे आर जस्ट कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, दे आर जस्ट पुलिंग अप. ओके, जब पुल होता है तो उसको बोलते हैं हाई टाइड, एंड जब ग्रेविटी जस्ट अपोजिट हो जाती है, देन इट्स कॉल्ड एज द लो टाइड. ओके, तो इनका जो राइज और फॉल पीरियोडिकली होता है, दिन में 2 बार ही होता है, विच इज कम अंडर द कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून. क्योंकि मून जो है हमारा काफी क्लोज है एज कंपेयर टू सन. सन बहुत दूर है,
तो उसका ग्रेविटी का इफेक्ट कम पड़ता है बट एज कंपेयर टू द मून। तो ये राइज और फॉल होता है, जो बीच का एरिया उसी को हम नेरेटिक जोन बोलते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट फिक्स, राइट। ये कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो इस एरिया को हम बेसिकली नेरेटिक जोन बोलते हैं। You can see in this here a definition is also there, neretic. Okay, so you can see in this image also, this is sublittoral, bathyal zone, abyssal zone and heddal zone. You know continental shelf and continental slope and continental rise. Okay, so this also a kind of sequence you should remember. This is based on the water depth, and जो इस कर्व को हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं बैथीमेट्री। ओके, बैथीमेट्री कर्व, basically water depth. So you can also remember this sequence. Okay, राइज के बाद यहाँ भी हमारा आएगा एबाइसल और हेडल। ओके, so let's see definitions. Narratics, this is the marine environment, basically open ocean, and non-marine which is not related to the open ocean. Okay, narratic environment, that continental shelf portions of the sea, basically from 3 meters to 200 meters, and this is basically affected by the high tide or low tide. And now this narratic zone is classified into epinarratic and infranarratic. Okay, and these, if you can add here also, मे बी फर्दर कुछ टफ करने को अगर जैम वाले चाहें तो दे कैन पुट नैरेटिक और इंफ्रा नैरेटिक हियर आल्सो। ओके, नैरेटिक की जगह इंफ्रा नैरेटिक दे सकते हैं या फिर इनके बीच में दे सकते हैं। तो यू शुड रिमेंबर फर्स्ट इट्स ईपी नैरेटिक देन इंफ्रा नैरेटिक। ओके, देन फोटिक जोन विच इज सनलाइट एरिया। ओके, जहां पे वो डीप करते हैं, जहां पे उनका पेनिट्रेशन हो सकता है। यू कैन सी हियर 50 मीटर, समवेयर इट इज 200 मीटर। ओके, it's vary. So this is bathyal zone, which is continental shelf more than 200 meters to 2000 meters. Okay, so these numerical, this is not that much important. You have to just mug up all these sequence. Okay, basically sequence आपको याद होना चाहिए. And this is the fluvial, which is running water, and lacustrine, L for lake. Okay, लेकुस्चरीन इन्वायरमेंट, बेसिकली फ्रेश वाटर होते हैं। देन स्वाम्पी क्या होता है, बेसिकली दलदल। दिस इज ऑल कम अंडर द नॉन मरीन इन्वायरमेंट। सो बेसिकली स्वाम्प में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो स्टेगनेंट वाटर। एक सपोज दिस इज काइंड ऑफ बेसिन, यहाँ पे एक स्टेगनेंट वाटर है जिसकी वजह से कोई फ्रेश वाटर का रिचार्ज नहीं हो रहा है या फिर कहीं ये वाटर जा भी नहीं रहा है। ओके, दे आर जस्ट स्टेगनेंट वाटर। और यहाँ पे जितने भी स्वैम्पी एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे प्लांट चाहिए। ओके, राइट, वी नीड सम ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मस्क, लाइक बहुत सारे एल्गी या प्लांट लाइफ चाहिए, जिसकी वजह से दे आर जस्ट decompose and they form kind of swampy area, daldal. This is also known as marsh. Okay, which is very much needed for the formation of the coal. Okay, जहाँ कोल का फॉर्मेशन होता है, we need swampy or marshy area. Okay, and next one is desertic, which is basically, you know, desert, which is having less of water, and glacial, basically frozen ice. Okay, so this is all about marine and non-marine. So this is some terminologies there. Bathyal zone, they are now here the depth wise. You can note down the depth also if you want. Basically, we don't need depth, just go through the sequence. Okay, sublittoral, littoral, and supratidal, intertidal. This is not important that much. Okay, so leave it. And now just go through one more terminology. This is all basic kind of concept which is we need for the further study of the paleontology. Okay, so there are kind of marine environment जहाँ पे हमें narratic,
nekton, plankton and benthic kind of life form is there. How they live, okay, वो कैसे उनका habitat है, they are on the basis of this we are going to define nekton, plankton and benthic. Okay, so nekton basically क्या होते हैं, they are free swimmer, वो जहां चाहे वहां swim करके जा सकते हैं, basically they are swimmer, kind of swimmer, good swimmer. Okay, and plankton basically floater, they are no effect of they don't having kind of swimming property, they are just floating on the surface. Okay, because of the wind or current they can flow in that direction. Okay, they don't having swimming property, the just they are free floater, वो करंट के थ्रू जहां करंट ले जाएगी वहां जाता है सिंपली. ओके, एंड बेंथिक बेसिकली बॉटम डिलीवर्स. ओके, जो बॉटम में लाई करते हैं, जैसे सपोज दिस इज द ओशन, दिस इज अपर पार्ट ऑफ ओशियन एंड दिस इज द बॉटम. ओके, जो बॉटम में रहते हैं they are known as benthos or benthic or benthonic. Okay, they are different terminologies there. Benthos also, benthos, benthos. Okay, benthonic, benthonic, like for यहाँ पे nekton, nectonic. Okay, plankton, planktonic, like that. Okay, so these are spent whole life at one place. क्योंकि क्यों one place, because they are sometime they are attached. Okay, you can see this is the bivalve, this is mitellus. Okay, one of the bivalve. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, mitellus, because they are having abaesus. Okay, byssus, this is kind of thread like structure which is attached to the substratum, or you can say the bottom of the sea floor. Okay, they are self attaching, ये खुद को अटैच करके रखते हैं. नाउ दे आर स्पेंड होल लाइफ एट द सरफेस ऑफ द ओशन फ्लोर. ओके, वो पूरा लाइफ बिता देते हैं यहीं पे, वो फीडिंग करते हैं, पैदा होते हैं, एवरीथिंग. So these kind of the structure is known as sessile. A benthos, they are divided into two. First one is sessile, which is going to be attached, और जो बाकी है vagile. Okay, VAGIL, vagile. Okay, ये बेसिकली क्या करते हैं, फ्री है, दे मूव फ्रीली बट एट द बॉटम, क्योंकि ये बॉटम के अंडर आते हैं. ओके, एक होते हैं जो अटैच होते हैं, दूसरे होते हैं जो बॉटम पे ही मूव करते हैं. ओके, सो एग्जांपल ऑफ बेंथोनिक इज बाइवॉल्व, ब्रैकियोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, कोरल्स. कोरल्स यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट फाउंड एट दैट मच डेप्थ. ओके, कोरल को हटा दो, गेस्ट्रोपोड्स. ओके, दे आर बेस्ट टूल फॉर पैलियो इकोलॉजी. ये पैलियो इकोलॉजी बहुत अच्छा बताते हैं बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्टेड दैट मच. ओके, तो इनका जो भी जैसा भी रहता है, इससे हमको पैलियो इकोलॉजी उस टाइम के इन्वायरमेंट पता चलते हैं. ओके, सो यू शुड नोट डाउन दिस पॉइंट. ओके, लेट मी like first one is the nekton, second one is plankton and benthic. ओके, benthic में हमारे दो थे. First one is sessile and next one is vagile. Okay, which is this one is attached to the bottom surface and they are freely moved. Plankton basically क्या थे, floater, and nectons basically free swimmer. Okay, guys, done?
Okay. Done, everyone? Ranjan, Prashad? Yes, ma'am. Okay. So now this sequence also, okay? So you should remember, बहुत सारे याद करने वाली चीजें हैं, तो बेटर होगा कि आप जैसे आज की क्लास है तो आप आज ही याद कर लो, ओके? बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे बेसिकली याद करने वाले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो दिस वन इज टोटली मेमोरी बेस्ड. सो बेसिकली क्या है कि आज ही आप इसको याद कर लो, ओके? इससे पहले भी आता है हमारा सुपर किंगडम, ओके? Super kingdom, then phylum, class, order, family, genus, species. And this sequence also sometime they gave you like this, okay? ऐसे ऐसे options में दे सकते हैं like this, okay? And you have to choose the one of the correct answer, okay? So this is very important and very easy question. You just remember this and just आपको 1 marks 2 marks मिल जाएंगे, okay? So basically, these are the classified. These are come under the taxonomy. Okay, taxonomy. इसके अंदर just first आता है super kingdom, then kingdom, then phylum. Phylum are now classified into classes. Then classes all are classified into order, and all orders are classified into family and genus, and then species. And species is the smallest unit. Okay. And this one is the largest unit, okay? Just note down this sequence, okay? You can remember like K, P, C, O, F, G, S. Kind of mnemonics you can made F, O, C, P, K. Just note down, okay? Guys, done? Okay. So let's solve these questions, okay? This is 2022 questions. You can see JAM 2022 questions, okay? So solve which one of the following is geochronologic unit. स्ट्रेटिग्राफी में आपने गाइस पढ़ लिया है ये जियो chronology unit is already done in stratigraphy. Anyone else, guys? Yes, it should be B. Okay. Prashad, this is not A, okay? It should be B. Geochronology. Basically, chronology is telling about the time, okay? Chronology, you can memes बहुत बन रहे थे, okay? Basically, is telling about the time. And geo basically earth. तो earth historical time, like geological time scale, जो भी इनकी बातें करते हैं उसको हम बोलते हैं जियो क्रोनोलॉजी यूनिट, ओके? सो इनके अंडर्स हमें हमारे आते हैं इयॉन, इरा, पीरियड, epoch and age, okay?
So these all are the sequence which is come under the geochronology unit. So you should remember this sequence. Okay, basically this is the geochronological unit, not systems member formation. Member formation is lithostratigraphic unit. Okay, this is lithostratigraphic unit, and system is basically chronology, not geo. Geochronology में ये आएंगे eon, era, period, epoch, age, and system is basically come under the chronostratigraphy. Okay, so we see all of lithostraty, geochronostraty, all kind of the sequence. Okay, so you can see this is all in the one table. Just revise this table daily, सारे questions बन जाएंगे. Okay, so these are the stratigraphic unit. Basically stratigraphic unit are kind of specific strata of the bed which is going to be defined on the basis of particular features. किसी पर्टिकुलर फीचर चाहे या पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक यू कैन से, उसके अकॉर्डिंग जब कोई भी स्ट्रेटा इज नाउ गोइंग टू डिफाइन, एंड वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, दे मे बी लिथोलॉजिकल, ओके, लिथोलॉजिकल और फॉनल सक्सेशन, or maybe you can say according to their age. Now there are different kind of characteristic according to them. The, as we know, stratigraphy basically the study of the strata or just bed of the strata. Okay, तो इनके stratigraphy unit को हम बोलते हैं all these type of unit which is based on the particular characteristic. Okay, किसी particular characteristic के बारे में ही अगर कोई लिथोलॉजी डिफाइन हो रही है, कोई बेड या स्ट्रेटा डिफाइन हो रहा है, तो उसी को हम इसके अंडर आएगा स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट. ओके, सो फर्स्ट वन इज द लिथोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट. हियर नाउ द कैच इज लिथोस. ओके, लिथोस बेसिकली अपर सरफेस ऑफ द क्रस्ट, lithosphere. You can understand from the lithosphere या lithostratigraphy. So this is all talking about the rock unit. Okay, rock unit basically lithology of rock. अब लिथोलॉजी रॉक के हम कैसे समझ सकते हैं, बाय द कंपोजिशन ऑफ बेड के क्या है. सपोज दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक, दिस इज मेटामॉर्फिक रॉक, and this is igneous rock. So they are classified on the basis of the rock. Okay, so this kind of the rock is known as lithostratigraphy. Clear guys? Give me 2 minutes. Guys, clear? Lithos is come from the lithosphere, okay, which is basically classified on the basis of the rock, which kind of the rock is talking about. Okay, so it may be different kind of the rocks which is having kind of like silica rock. Okay, different kind of rocks basically. And now next one is the biostratigraphy. Again, catch is bios which is talking about the living organism like biology. You can understand from this also. Okay, so basically this is talking about the biota और फॉसिल में हमारे दो आते हैं basically fauna and flora. Okay, fauna means organism, flora means plant organism. Okay, plant basically. So this is talking about the kind of living organism like you can say biota, fossils, fauna and flora. This is all talking about the organism. Okay, so now these all are also classified into this type of the units. Okay, basically group, formation, member and bed. And here biostratigraphy, रेन जोन, कंक्रीट जोन, इनका सीक्वेंस नहीं याद करना है आपको, बिकॉज दिस just classified into different types, but these all are
in the kind of sequence. Okay, group के बाद formation, then formations are form member, and members का particular जो unit है, they are known as the bed. Okay, so this is bed, basically सबसे smallest unit होगा, group is the largest one here, and same is here also, ये largest है and epoch इसका सबसे smallest है. Okay, smallest one. Here this is Enodum, Iradum, system, series, stage, and chronozone. And this is chrono, basically chron. Chron basically means time. So this is all are divided according to their time. जो भी हमारा स्ट्रेटा है पर्टिकुलर एज पर्टिकुलर टाइम में जो फॉर्मेशन हुआ है उसके बेसिस पे नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस स्ट्रेटा और बेड ऑफ दिस स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस. दिस इज बेस्ड ऑन द chronostratigraphic unit. Okay, or this is classified into chronostratigraphic unit. Clear guys? इसमें किसी को confusion? Lithostratigraphy, biostratigraphy and chronostratigraphy, any doubt? Ranjan, Giri, Prashad? This table is very much important. इससे बहुत सारे questions आते हैं. Basically equivalent question mainly ask, like eon का equivalent क्या है? तो enodum. ईरा का इक्विवेलेंट इरेदम. ओके, पीरियड का इक्विवेलेंट सिस्टम या सिस्टम का इक्विवेलेंट पीरियड. ओके, सीरीज का इपॉक, स्टेज का एज, एंड क्रोनोजोन. बेसिकली दीज आर outdated terminology, they are not going to use now, but you can remember chronozone or chron. Okay, so these all are the sequence. You can see in this also. Chronostratigraphy, basically time zone, and geochronology, basically earth, rock time zone. You can say rock time zone. Okay, rock lithos हो जाएगा, sorry, just earth का time. Okay, so they are now classified again: iradum, era, system, period, series, epoch, stage, age, and zone, phase, या chronozone या zone. Okay, so on this basis of this, now solve few questions. Okay, you can see this kind of question asked: the smallest division of geological time scale. Smallest division is asking smallest division of geological time scale. You can see geological time scale, this is asking. So this is epoch. Basically epoch is the this one, option D. Yes, everyone correct. Okay, so now 49 questions. The fundamental unit of chronostratigraphic. Okay, chronostratigraphic क्या था हमारा? It should be C, guys. C, stage. Okay, stage जो हमारा fundamental units, सबका fundamental units are different. Okay, lithostratigraphy की fundamental units है, let me, this one is the fundamental unit. Okay, and this one is the fundamental units. You should remember fundamental unit, and this is fundamental unit of chronostratigraphic.
and this is fundamental unit of geochronologic unit. Okay, do not confuse geochronologic or chronologic. Okay, guys, done? Note down this 2 point. Okay, this is very much important. Okay, so next question is which one is odd one. Okay, वो जो sequence थे उनमें से ऐसे कौन से हैं जो नहीं है, which is not come under the particular sequence or particular chronological unit. Okay, guys try to answer. देख के भी बता सकते हो आप, चार्ट में you can see. Guys, B. Okay, the answer is B. Very good. It should be zone. Okay, zone is different one. Period, age, epoch are come under the chronological unit. Okay, so next one is the basic unit of biostratigraphic. Okay, biostratigraphic का basic unit. You can understand the fundamental units or basic unit. This kind of the question is mainly asking. Okay, चाहे वो smallest division पूछे या फिर fundamental. You can see here the fundamental is asked and sometimes equivalent also asked. Okay, just go through this table, सारे questions बन जाएंगे. Okay, equivalent आएंगे तो you have to remember this one and sequence like this ones. Okay, and fundamental which we already note down, these are all are the fundamental. So the basic unit of the biostratigraphy is it should be B also. Okay, again B. Yes, it should be zone. So let's see this question. This is I think 2017 question, 17-year question. Okay, Acme zone indicates what? Acme zone. This Acme zone is come under this one. Okay, you can see Acme zone here. So अगर Acme zone पूछे it's come under which kind of the stratigraphic unit, so it's come under the biostratigraphic unit. Okay, you should understand this all terminology first, like range zone, concrete zone, Acme zone, assemblage zone and interval zone. So basically these all are zone. You can see zone which is come under the biostratigraphic unit. Okay, ये सारे zone जो है यहाँ पे you can see zone, all zone are come under the biostratigraphic unit. So you can say this is kind of hint which is given to you. This is zone. So zone हमें पता है कि वो biostratigraphic unit के ही अंडर आएंगे. Okay, so Acme zone basically क्या है? You should answer. Giri says C. Prashad says C. Yes, you guys are correct. It should be C. Okay. The maximum abundance of the fossil species. Okay. किसी particular fossil का जो species है, they are going to be found at the maximum abundance. Okay. Suppose कोई एक strata bed है and here यहाँ से suppose this is the bottom. So this is the first appearance.
datum, okay, and last appearance datum. लास्ट अपीयरेंस और फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट मतलब किसी भी बेड फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ ओल्डर होगा, यहाँ न्यूअर होगा, ओके तो यहाँ पे जो पहले मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी ओल्डर वन, ओके ओल्डर, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ओके सुपरपोजिशन, जो नीचे होंगे वो ओल्डर होंगे एंड द टॉप इज फाउंड एट द न्यूअर वन, ओके न्यू ऊपर होंगे, ओल्डर नीचे। सो दिस इज फर्स्ट अपीयरेंस, तो जो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए या किसी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल जो भी मिलेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट अपीयरेंस डेटम एंड हियर लास्ट अपीयरेंस डेटम। तो सपोज ये यहाँ पे गए एंड नाउ दे आर काइंड ऑफ लाइक दिस, ओके so here lots of the fossil species is there at the particular zone, ये zone is this is the particular zone। अब यहाँ पे बहुत सारे species मिल रहे हैं, ओके और बेसिकली दे आर सेम काइंड ऑफ स्पीसीज नॉट डिफरेंट वन, तो इनका हाईली अबंडेंस है, बहुत सारे स्पीसीज मिल रहे हैं, लाइक एक ही स्पीसीज है, इनका अबंडेंस बहुत ज्यादा है। तो अबंडेंस इनका बहुत ज्यादा होने का रीजन क्या हो सकता है, व्हाई दिस इज मैक्सिमम इन डाइवर्सिटी, diversity, okay spelling is wrong here, okay diversity, why they are maximum diversity or abundance, because they may have a favorable condition, उनका जो फेवरेबल कंडीशन बेसिकली कोई उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया हो, गुड इन्वायरमेंट यू कैन से, और फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट जिसकी वजह से इनका एबंडेंस बहुत ज्यादा हो गया हो, ओके इनको कोई प्रिडेटर नहीं रहा हो जो इनको खाकर खत्म करे, वहां पे उनको बहुत लाइफ फ्लरिश चल रही हो, उनका एबंडेंस बहुत हाई हो क्योंकि वहां गुड इन्वायरमेंट रहा हो, उनके लिए बहुत सुटेबल रहा हो, तो उनका जो नंबर ऑफ स्पीसीज है नाउ दे आर ग्रोइंग सो मच, ओके वो इतने ज्यादा इनलार्ज हो गए कि दे आर नाउ गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्मे जोन। एक्मे जोन इज ऑल्सो नोन एज abundance zone, okay or one more terminology is there, this is like favorite question of the IIT exam, okay they are must ask one question from related to this, okay ये fix है तो you should remember peak zone, acme, abundance and peak। Peak basically it is telling about the formation or you can say the generation और growth of the particular species, तो इनका peak है यहाँ पे, peak means बहुत बहुत abundance है, बहुत largely they are going to be diverse, बहुत सारे, okay so abundance, peak और acme, these all are the same things, they are the maximum abundance of the fossil species, okay clear guys? So let's move next question. The body of strata in which the maximum abundance of particular species is the same. See the questions are repeating. एक्मे उनका फेवरेट है लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम एक्मे की जगह abundance और पीक जोन, ओके guys this question is easy, it should be again C, yes acme zone, okay again same thing you can note down this definition, the maximum abundance of the particular species, okay so let's see all those this biostratigraphic unit this in detail, okay इससे तो क्वेश्चन आने मस्ट है तो यू शुड फोकस दिस पॉइंट्स, ओके सो लेट्स सी फर्स्ट इज द टेक्सॉन रेंज, okay taxon range or biozone, okay which is based on the first appearance and last appearance, you can understand by this strata, this is kind of bed or you can say kind of strata zone and now this is here species का first generation, okay first appearance and this is the last appearance datum, okay so इनका जो बीच का जोन है
This area is known as taxon range zone. Okay. So you can note down the definition of taxon range zone. Taxon range zone, basically this is defined by first appearance or last occurrence of single taxon. Okay, single, you can say single species, right? ये जो एक है, this line is showing a single species. Okay, so single species का here first appearance and this is last appearance. Okay, so this line showing particular the presence of the particular species of the any kind of species. कोई भी species ले लो, suppose this is trilobita. Okay, ट्राइलोबाइटा, यहाँ पे फॉर्मेशन उसका ग्रोथ लाइक फॉसिल मिला एंड देन दिस होराइजन और यू कैन से दिस जोन पे उसका लास्ट अपीयरेंस मिला. तो दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज द टेक्सॉन रेंज जोन. ओके, क्लियर गाइस? दिस इज बेसिकली द की इज हियर. दिस इज टॉकिंग अबाउट द सिंगल स्पीसीज. ओके, यहाँ पे किसी एक स्पीसीज के बारे में ही बात हो रही है. So taxon basically first appearance or last appearance of the single species is known as taxon range biozone. Clear guys? Yes, ma'am. Okay, okay. So next one is the concurrent range biozone. Okay, basically concurrent is also known as overlapping. Overlapping means समझते हो, like एक species or दो species, they are like conjugate each other. Okay, now they are formed at the same time पे हमें कोई भी species मिल रहा है, that's why they are known as overlapping range zone. Okay, this is also known as overlapping range zone. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक taxon का यहाँ पे जो first appearance मिल रहा है and now there this is the second species. Okay, species second and this is species first. So first species का हमें first appearance datum मिल रहा है and second species का हमें मिल रहा है last appearance datum. Okay, so they are all conjugate each other. Now they are known as the concurrent range zone, basically based on the overlapping of two different species. Okay, here the again catch is this is talking about the two different, you can say taxon और species. और यहाँ पे हमारा सिंगुलर की बात हो रही थी किसी सिंगल स्पीसीज की, यहाँ पे दो स्पीसीज की बात हो रही है. यू कैन सी दिस लाइन इज शोइंग अनदर स्पीसीज एंड दिस लाइन इज शोइंग अनदर स्पीसीज. ओके, फर्स्ट अपीयरेंस शोइंग ऑफ स्पीसीज 1 एंड सेकेंड अपीयरेंस ऑफ शोइंग स्पीसीज 2. ओके, लास्ट अपीयरेंस बेसिकली. So note down the definition of this one. Okay, so interval of overlap between LAD, last appearance of first or you here second species, right? You can say write down first species, you can say also. Okay, first species and first appearance like FAD
of second species. राइट यहाँ पे इससे पता चल गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज एंड इनके जो पर्टिकुलर इंटरवल है उन्हीं को बोलेंगे करेंट रेंज जोन. ओके एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ओवरलैपिंग रेंज जोन. And now this one is the interval zone. Okay, this one is quite easy. You can see this is the first appearance datum and both are the interval. Okay, you can see this is the also interval zone and this is also interval biozone. So basically inke do kind of, you can say two kind of cases is there. Okay, let me change the new slide. Okay, you can see एक बायोस्ट्रेटा है like this and यहाँ पर this one is, this line is showing a particular species. Okay, so this one is the first appearance datum. Datum basically क्या होता है, kind of strata bed. Okay, the smallest unit of the bed is known as datum and this one is the again FAD. Okay, and this one is species first and this one is a species second. And now next one is this one and this one. This one is showing last appearance datum of species second and this one is again last appearance datum of species first. Okay, you can understand both are the interval zone. Okay, सो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली टॉप और बॉटम डिफाइन हो रहा है और विच इज गोइंग टू बी डिफाइंड बाय द अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज. ओके, यहाँ पे एक स्पीसीज का फर्स्ट अपीयरेंस शो हो रहा है एंड अगेन अनदर स्पीसीज का फर्स्ट अपीयरेंस इज शोइंग इन द पर्टिकुलर बायोजोन. ओके, and here last appearance of the particular species is showing here at the zone and again the last appearance, only last appearance and here first appearance like अगर कोई भी बेड ले लो देन कोई भी यहाँ पे सबसे ओल्डर जो फॉर्म होगा वही सबसे पहले फॉर्म हुआ होगा. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज सेइंग फर्स्ट अपीयरेंस. अब ये फर्स्ट है तभी तो ओल्डर हुआ. ओके, so this is first appearance of another species and second appearance of another species and now this is the last appearance of another species and again last appearance of another species. Okay, so basically talking about the appearance of different kind of species in the particular zone. So note down the definition. Top and bottom are each defined by single first or last appearance of taxon. Okay, guys, clear? Any doubt? ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं बट यू शुड रिमेम्बर क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं. ओके,
And next one is acme zone, which is very much easy. Acme zone we already understand, like this particular zone ke particular species. Okay, so they are having abundance, and you should remember acme zone, abundance zone, and peak zones all are the same thing, which is talking about the particular abundance of the any kind of species. Okay, so उनको बोलेंगे acme zone. Now this all are in the same image. Okay, and phylogeny, this one is the lineage biozone. This one again a newer biozone. Let's see. Lineage biozone basically ये बहुत important है. You should know this one also. Okay, lineage zone. Okay, lineage zone basically you can see यहाँ पे एक particular, it is talking about a particular kind of species. Okay, and now you can see this is RST. It means they are evolving. Okay, इनका evolution हो रहा है. Suppose ये पहले R था, now they are going to change, but these all are talking about the same species. This line is showing a same species. Okay, same species. किसी एक स्पीसीज में इवोल्यूशन हो रहा है. ओके, पर्टिकुलर स्पीसीज इज नाउ ग्रोइंग एंड चेंजिंग इट्स फॉर्म. ओके, इसको बोलते हैं हम फाइलोजेनी. ओके, फाइलोजेनी लीनिएज. ओके, इसका दूसरा नाम है फाइलोजेनी लीनिएज. अगर सपोज जैसे एक्मे जोन का हमको एबंडेंस, कीवर्ड एबंडेंस है, तो नाउ द लीनिएज बायोजोन का कीवर्ड है फाइलोजेनी लीनिएज. ओके, फाइलोजेनी बेसिकली इवोल्यूशनरी. इसमें एंसेस्टर इज सेम. आर हियर आर इज एंसेस्टर. ओके, एंसेस्टर मीन्स जो सबसे पास में जो लाइक जिस जहां से ओरिजिन स्टार्ट होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उनको एंसेस्टर बोलते हैं. नाउ लाइक एंसेस्टर से जो सबसे लास्ट में फॉर्म होते हैं उनको डॉटर, लाइक पेरेंट्स देन डॉटर. ओके, डॉटर. तो ऐसे काइंड ऑफ लिंकेज इज देयर. ओके, जो हमारे पूर्वज थे उन्हीं को हम एंसेस्टर बोलते हैं, और जो आज की जनरेशन है they are going to be known as daughter. Okay, so lineage biozone basically linkage. You can understand from the lineage basically linkage of what? Basically evolutionary trend बता रहा है. जो ancestor है now they are showing S, now they are going to be evolved. इनमें कुछ changes आए, now they are going to be change its form. उनका habitation change हुआ, उनका look change हुआ, now they are called as the S. Okay, these all are basically to understand. ये जो x y z दिया है, they are going to be just easier to understand. Okay, तो पहले s में convert हुआ, then now और टाइम के साथ कुछ इवॉल्वमेंट हुआ, कुछ जो जनरेशन और इन्वायरमेंट चेंज हुआ, कुछ हैबिटेट न्यू फॉर्म किए, देन दे आर गोइंग टू बी फॉर्म एट द टी. लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा हॉर्स का लीनिएज जोन है, यू कैन राइट हियर हॉर्स लीनिएज जोन. ओके, सो पहला हमारा था इयोहिपस, then it's formed Mesohippus. Now it's Merychippus. Okay, and Pliohippus. Last one, which is known as Equus, is also known as the modern horse. ओके, ये सबसे न्यूअर वन है. एंड ओल्डेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज एंसेस्टर. सबसे जो हमारे पुराने थे एंसेस्टर, यू कैन से एंसेस्टर इज इयोहिपस, जो सबसे ओरिजिन इनका स्टार्ट होता है. एंड नाउ दिस इज वन मॉडर्न. ओके, जो सबसे न्यूअर वन है विच इज हॉर्स, विच इज मॉडर्न हॉर्स बेसिकली. सो दिस इज इक्वस. ओके,
trick is there, like Eon, Miss for Mary, and P for proved, equals from equation. Okay, equation. So Eon, Miss Mary proved equation. Because these are the lineage, you have to remember this lineage zone. Okay, so this is kind of trick is there. Eon, Miss Mary, Merychippus Mary, and proof Pliocene, oh sorry, Pliohippus and equals from equation. Okay, so basically linkage in यहाँ जो image है you can see, यहाँ हमारा suppose Eohippus था, are here Eohippus. Now they are going to form with the time के साथ इनमें जो changes आए, now they are going to form as the Miohippus, and now T is showing to, you can say, Merychippus or equus. Okay, so this diagram is showing like generation to generation they are changing. Okay, so these kind of changes is known as lineage zone or lineage biozone, which is also known as the phylogeny lineage zone. Okay, so keyword is here phylogeny or evolutionary trend is showing by this particular kind of biozones. Okay, and this is the image of Acme zone, like you can say the particular abundance of these species. So clear guys, all those kind of different zones? Any doubt? Okay, so let's write down the definitions also. The body of strata containing specimens representing specific segment of evolutionary lineage. Okay, evolutionary lineage पर्टिकुलर इस जो स्ट्रेटा में है दे आर शोइंग लीनिएज जोन. ओके, और जो हमारे फर्दर काइंड ऑफ स्पीसीज थे दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशन, जैसे थे एज इट इज. ओके, यहाँ पे सपोज ट्राइलोबाइटा का अपीयरेंस हुआ एंड दिस इज द लास्ट अपीयरेंस, बट इन द केस ऑफ लीनिएज दे आर गोइंग टू बी इवॉल्व विद द टाइम. टाइम के साथ उनमें कुछ लाइक जो फुट थे या फिर कुछ जो उनके स्कल थे या उनके टूथ थे, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म और विद द टाइम, जैसा टाइम और इन्वायरमेंट मिला, जैसा उनको हैबिटेट मिला, अकॉर्डिंग टू देम दे आर गोइंग टू बी चेंजेस itself. Okay, so this is come under the lineage zone, showing phylogenetic lineage. Okay, जैसे एक्मे जोन का abundance word is key, here the phylogenetic is again key and evolutionary trend is key. Okay, और उसका एग्जाम्पल है इयोहिपस, मीसो, मैरी, प्लायो, इक्वस. Guys, done? Yes, ma'am. Okay. So this one is very much important. Again, we see in 2022, this question is already asked
brachiopods, okay, which is come under the late Paleozoic, which is also come under the Silurian, okay. So you should go through all these. Take a screenshot, guys. Maybe in further future, it may be asked about trilobite, ammonoids, gastropod, anything, okay. So you should remember all these. Done. Yes, ma'am. Basically, corals are in Cambrium, okay. You can, अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिखे तो Cambrium also, okay. Cambrian, sorry, this is N, okay. So now come to the mass extinction, okay. Okay, guys, this we are going to study on the further classes, okay. So I think today's time is up, okay. This take times. Mass extinction thoda bada hai, and they are going to be asked many questions related to the mass extinctions, okay. Like you can see this one, this is 2022 questions, and these all are come under the mass extinction, okay. So we have to go through the thoroughly one by one all these kind of 5 different kind of extinction, okay. So it's take time, so we will do it another classes, okay. Guys, are you agree? Yes, ma'am. Okay, okay, so let's bind up this class, and thank you so much for attending. So koi doubt? No, ma'am. Okay, okay, then good night. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good night, good night.